एंड वेलकम टू डॉक्टर्स किचन। काफी ज्यादा बरसात हो रही है, मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा है और इस मौसम में हर कोई पिकनिक जाना पसंद करता है। तो मैंने सोचा आपके लिए मैं पिकनिक में एक डिश ले जाने के लिए एक स्नैक्स बनाती हूँ। ये मूंग दाल के पकौड़े हैं। इसको मुंबई में मूंग भजी या फिर मूंग भजिया भी बोलते हैं और ये स्ट्रीट फूड ऑफ मुंबई भी है। टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ स्नैक्स व्हिच यू कैन कैरी इट इन योर ऑफिस और मे बी फॉर द पिकनिक। Out of moong dal lentils, I have made this snack. So let's see what all things are required to make it and how do I make it. ये मूंग दाल के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मूंग दाल लिया है जिसको 3 से 4 घंटे तक भिगा लिया है। दिस इज मूंग दाल, ग्रीन स्प्लिट दाल, which I have already soaked in water for 3 to 4 hours. I'm taking 3 to 4 green chilies. You can adjust this according to your taste. Ginger, ये अदरक का इस्तेमाल करेंगे 1 से 1.5 इंच का। This is few garlic. I'll be using it. आप garlic 3 से 4 ले लीजिए and less than half teaspoon. This is cumin seed, coriander या हरी धनिया है, cilantro. I'll be taking it. Salt to taste. 1 spoon of garam masala and oil for cooking. Now I'll take 3 to 4 garlic, 1.5 inch of ginger, 4 green chili and coriander. This is all going to go in mixie and I'll grind it. अभी लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और धनिया को मैं मिक्सी में पीस लूंगी। ये जो मूंग दाल, this also we are going to coarsely grind it in a mixer. We are not going to make a fine paste but just coarsely grind it. I'll be adding garam masala. This is cumin seed. Salt to taste. Now I'm adding the masala which I made it with ginger, garlic, green chilies and green coriander. Now अदरक, लहसुन, धनिया और मिर्ची को जो मैंने पीस लिया है अभी उसको इसमें मिला देते हैं। आप एक साथ भी पीस सकते हैं लेकिन मैंने सेपरेट इसलिए पीसा है क्योंकि मुझे अच्छी तरह से देखना था कि ये दाल जो है वो दरदरा पिसे। You can grind it together with the lentils, but I just wanted to make sure that I'm grinding it coarsely, the dal, so I grinded it separately. Now we are going to fry it. मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें तेल डाल दिया है। अब इसके छोटे छोटे पकौड़े हम बना लेंगे। आप फोक का इस्तेमाल कीजिए, कांटे का चम्मच, उससे जो है वो बहुत आसानी से छोटे छोटे साइज में पकौड़े बनाने में मदद मिलती है। यू यूज फोक while you are just putting the batter in oil so that you can make equal size and small portions. Now you see it looks so beautiful. My pakoras are ready to serve. I'll serve it with green chutney, either mint chutney or coriander chutney. You can serve even with the tomato sauce. सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट लेने के लिए।